So in this topic of permutation and combination, so first of all, you need to write down these three formulas for n factorial, for NPR, and for NCR. P for permutation, C for combination. These three formulas will be given in the formula sheet. Now, what does this factorial mean? If I say find 6 factorial or 5 factorial or 4 factorial, you can do this by using your calculator. So the purpose of these formulas is just I want to tell K what actually that calculator does, what algorithm is being used by the calculator to find the n factorial. Like if I say find 4 factorial, so you can see in your calculator there is a button of factorial, sign of exclamation mark. You press 4 and then put that factorial over there in that calculator. Tell me what's the answer. If the cameras are on, then I can unmute everyone. Okay, yes, on. Now you can unmute yourself. So Mahad is saying, so 4 factorial is answer is 24. Now what does 4 factorial mean? Calculator ने 4 factorial का आंसर जो 24 दिया है, उसके बैकग्राउंड में क्या उसने एल्गोरिथम यूज किया है? 4 factorial mean 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1. 4 factorial mean 4 will get multiplication with a number which is 1 less than 4, 3, and then again 1 less than 3, which is 2, 1 less than 2, it is 1. So 4 times 3 times 2 times 1. 4 times 3 is 12, 12 times 2 is 24. So 4 factorial is 24. If I say find 5 factorial, so what does 5 factorial mean? 5 times 4 times 3 times 2 times 1. So 5 into 4 into 3 into 2 into 1 is 120. और कैलकुलेटर से डायरेक्ट आपके पास 5 factorial प्रेस करने से आ जाएगा 120. So see here, what does n factorial mean? So n factorial mean n, then subtract 1 from it, n minus 1, then further subtract 1 from it, n minus 2, again subtract 1 from it, so n minus 3, n minus 4, n minus 5, and finally your terms will be 3 into 2 into 1. If I give you a question here, without using calculator, find 8 factorial divided by 6 factorial. Can you find that without using calculator? Can you find 8 factorial divided by 6 factorial? Who left the meeting? Zaha is not there, so she left the meeting. Okay, what's the answer for 8 factorial over 6 factorial? Yes, 56. One of the way, without using calculator, I can write 8 factorial as 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. And 6 factorial is 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Now 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 6, 5, 4, 3, 2, 1 will be cancelled out and you will be left with 8 times 7, which is 56. So the other way, instead of doing with this method, just a minute. So instead of doing this one, I can use another way. See here, please. 8 into 7. Instead of writing 6, 5, 4, 3, 2, 1, I can write simply 6 factorial because I can see there is a 6 factorial in the denominator as well. Instead of writing 6, 5, 4, 3, 2, 1, I can write simply 6 factorial. And that 6 factorial and this factor 6 factorial will be cancelled out and you'll get the answer 56. Now, if I ask you to find n factorial over n minus 2 factorial without, definitely we can't use calculator here.
So what will be the answer of this in terms of n? N factorial over n minus 2 factorial. What will be that? N into n minus 1. Yes, n into n minus 1. You can write your numerator. Basically, n factorial mean n into n minus 1, then n minus 2, n minus 3, and so on. You can write 3 into 2 into 1. But instead of writing this, I can stop here as well, because I can see in the denominator there is n minus 2 factorial. So n into n minus 1 into n minus 2 factorial, and the denominator is also having n minus 2 factorial. So n minus 2 factorial and n minus 2 factorial will be cancelled out, and we are left with n into n minus 1. Okay, some practice for the permutation and combination. If the question says find 5p2, p mean permutation, this formula. We know that npr is equal to n factorial over n minus r factorial. So 5p2 will be equal to, as per that formula, so 5 factorial over 5 minus 2 factorial, which is 5 factorial over 3 factorial. And 5 factorial is 5 into 4 into 3 factorial. 3 factorial will be cancelled out. So 5 into 4, your answer will be 20. और ये आप कैलकुलेटर से भी कर लेंगे, डायरेक्ट आप कैलकुलेटर में पुट करें 5p2, you will get your answer 20. बट कैलकुलेटर क्या मेथड यूज करता है, भी मैंने वो बताया है आपको. Similarly, you can find 6c4. Now 6c4 mean you have to use this one now, combination. So 6c4 means 6 factorial over 6 minus 4 factorial, 4 factorial. 6 factorial is 6 into 5 into 4 factorial, and the denominator 6 minus 4 is 2 factorial into 4 factorial. That 4 factorial and 4 factorial is cancelled out. The answer of 2 factorial is 2. 2 factorial is 2 multiplied by 1. So वो 2 cancel हो जाएगा, 6 5 the 30 over 2 is 15. So the answer of 6c4 is 15. ये जितनी चीजें बताई हैं इनमें से पेपर में कुछ भी नहीं आने वाला, लेकिन ये हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे. 6p2, 3p2, 5p2, 10p3, 10c2, 10c7, 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल. तो ये इनके जो फॉर्मूलाज हैं ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से सारी कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन सिर्फ आपको पर्पस बताना ये था कि अगर आपको ये आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे फॉर्मूलाज, वो कैलकुलेटर कैसे आंसर दे रहा है. Okay, now let's start this chapter, permutation and combination. What we are going to do here in this chapter, basically we will study in this chapter, we will study the counting principles. हम ये देखेंगे कि हमने डिफरेंट इवेंट्स को काउंट कैसे करना है. इफ आई गिव यू एन एग्जांपल कि 3 चेयर्स हैं, उन पे 3 लोगों ने बैठना है, तो कितने डिफरेंट वेज से उन चेयर्स पे बैठ सकते हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट कितनी बनेगी. इफ आई टेल यू 5 चेयर्स, 5 पीपल, कितने डिफरेंट वे से दे कैन सिट ऑन दोस चेयर्स, कितनी डिफरेंट अरेंजमेंट बनेगी. 10 चेयर्स हो तो उन पे कितनी बनेगी, और अगर 20 चेयर्स हो, उनमें से उन 20 चेयर्स में से 20 पीपल हों, उनमें से 3 चेयर्स अवेलेबल हों, उन 20 में से 3 लोगों ने वहां पे बैठना हो, कितने डिफरेंट अरेंजमेंट में बैठ सकते हैं. सो वी विल बी काउंटिंग द थिंग्स. सो इस चैप्टर को बिल्कुल भी इजी नहीं लेना. और सेकेंडली, इस चैप्टर का रिफ्लेक्शन नेक्स्ट टॉपिक में भी होगा इन प्रोबेबिलिटी. Huda is not here, so she will be missing a lot. So first of all, I'll tell you the basic counting principle. Basic counting principle.
which you did in your O level, उसको सिर्फ थोड़ा सा रिवाइज करेंगे. टोटल पॉसिबल आउटकम हम काउंट करेंगे. If I toss a coin, that will be a revision of your O level now for just 3-4 minutes. If we toss a coin once, how many possibilities are there? There are two possibilities, mean head and tail. Either it will be a head or it will be a tail. So there are two possibilities, two outcomes. Okay, if I toss the coin 2 times, coin को 2 times toss करें, या मैं ये कहूं कि we have 2 coins और उनको toss कर रहे हैं, एक ही बात है. So how many outcomes are there? Yes, Marwa. G settings are changed. You can unmute yourself. I I can't hear you. Yes, Aisha. 4. Yes, there are 4 outcomes. When you toss a coin 2 times, 4 outcomes are possible. So कौन सी possible हैं? एक possibility है कि you get head head. First पे भी head आ गया, second पे भी head आ गया. Then head tail, tail head, and finally tail tail. So these are the 4 possible outcomes. So 4 outcomes. Okay, if we toss a coin 3 times, if we toss a coin 3 times, then how many possible outcomes are there? G. One of them is I'm writing कि तीनों दफा आपके पास head आ गया, head head head. Now on your notebook, write all possible outcomes and then tell me how many outcomes are there. If even you know the total outcomes, simply you have to write all the possible outcomes on your notebook. The first one I have written head head head. You need to write all possible outcomes. Yes, there are 8, but you need to write all of them. So the first one is head head head, then head head tail, head tail head, head tail tail. So first I wrote which are starting from head. Now I'll write which are starting from tail. Tail head head, tail tail head, tail head tail, and tail tail tail. So if you count all of them, there are 8 possible outcomes. So rule is simply कि एक दफा अगर आप कॉइन को थ्रो करते हैं, एक सिंगल कॉइन में देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज. अगर उसी कॉइन को 2 टाइम्स थ्रो करते हैं, so 2 multiplied by 2 which is 4. उसी कॉइन को अगर आप 3 टाइम्स थ्रो करते हैं, तो in a single event there are 2 possibilities. So 2 times 2 times 2 is 8. So how many possibilities will there be if the coin is tossed 4 times? It will be 2 into 2 into 2 into 2, which is 16. Okay, let's take an example of now dice. अगर एक dice है, उसको throw किया आपने to 1 time, तो 1 time throw करने से there are 6 possibilities. 1 dot, 2 dot, 3 dot, 4 dot, 5 dot, 6 dot. If we are throwing the dice 2 times, then how many possibilities are there? 36. 36, right? 6 times 6.
क्योंकि एक दफा 6। सो कौन सी 36 पॉसिबिलिटीज हैं? अगर आपके पास फर्स्ट डाइस से 1 आ गया, सेकंड से 1 1 1, फर्स्ट से 1 आ गया, सेकंड से 2 1 2, सो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, और फिर से 2 1 2 2 2 3, so total there are 36 possibilities. If we are going to throw a coin and dice simultaneously, एक कॉइन को थ्रो किया, एक डाइस को थ्रो किया, आप बताएं टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? For from coin you have to and mean multiply. I hope you remember the rule in your O level, and mean multiplication or mean plus. And mean multiplication. So coin and dice. So coin say there are 2 possibilities, dice say there are 3 possibilities, sorry 6 possibilities. So 2 into 6 there are 12 outcomes. कौन कौन सी 12 outcomes हैं? कॉइन से अगर हेड आ गया, डाइस से 1, हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, इसी तरह टेल के साथ भी 6, so total there are 12 possibilities. So simple counting principle is कि आपके पास अगर मल्टीपल इवेंट्स हैं तो उनकी इंडिविजुअल आउटकम्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको उनकी कंबाइंड टोटल आउटकम आ जाएंगी आपके पास. यस महत. सर जो फिफ्थ है उसमें इस तरह होगा ना कि जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम 1 और 2 आए तो हम लोग पेयर में एक पॉसिबिलिटी काउंट करेंगे या 1 और 2 को हम लोग 2 पॉसिबिलिटी काउंट करेंगे? देखिए आप देखेंगे कि फर्स्ट डाइस से 1 आ गया, सेकंड से 2 आ गया, तो तो वो 1 2 2 ये फर्स्ट पॉसिबिलिटीज होंगी. पॉसिबिलिटी है. आप ओके. इवेंट अगर 1 को अलग ले रहे हैं तो फिर कहो आप एक ही दफा थ्रो कर रहे हैं, मैंने कहा 2 टाइम्स थ्रो करना है, तो दोनों को कंसीडर करेंगे तो एक इवेंट बनेगा. ठीक से. ओके, सपोज कि हमारे पास एक ये बॉक्स है, से बॉक्स ए, इसमें देयर आर 5 cards with numbering 1 2 3 4 5. There is a box B जिसमें there are 3 cards with the numbering 1 2 3. I'm going to pick one card at random from each box. First from box A, then from box B. So दोनों बॉक्स से एक कार्ड हमने रिमूव करना है और उनसे एक नंबर बन जाएगा. सपोज फर्स्ट बॉक्स से 1 आता है, सेकंड बॉक्स से 2 आता है, तो एक नंबर बन जाएगा 12. So how many possibilities are there? How many outcomes will there be? टोटल आउटकम्स कितनी होंगी? ये बॉक्स, दोनों बॉक्स से एक एक आपने कार्ड ड्रॉ करना है और एक नंबर बन जाएगा. So how many possibilities are there? So from card A there are 5 outcomes, and from B there are 3 outcomes. So 5 times 3, it's 15. So 15 outcomes are possible. कौन कौन सी? देखिए फर्स्ट से 1 आ गया, सेकंड से 1 1 1, फर्स्ट से 1, सेकंड से 2 1 2, फर्स्ट से 1, सेकंड से 3 1 3. So 1 के साथ 3 possibilities, then 2 के साथ 2 1 2 2 2 3, and so on. There will be 15 possibilities. 5 times 3, simple counting principle. Okay, then another example, last example of simple counting principle. You are going to take a dinner, और उसमें in that dinner main course you have in main course you have 6 options. वो 6 ऑप्शन आपके मेन कोर्स में क्या है? वो चिकन एक ऑप्शन है, एक बीफ ऑप्शन है, और बहुत सी ऑप्शंस हैं.
एंड देन एट द एंड डेजर्ट्स में मीन स्वीट्स में हमारे पास वी हैव 4 ऑप्शंस, डिफरेंट 4 स्वीट्स हैं एंड यू कैन चूज वन फ्रॉम ईच, एक मेन कोर्स में से चूज करेंगे और एक स्वीट्स में से चूज करेंगे. सो हाउ मेनी ऑप्शंस डू यू हैव? In how many ways you can take your dinner? Yes, Tamur. It's 24. So main course में से 6 times 4 it is 24. हो सकता है कि आप main course में से chicken लें. So chicken के साथ first sweet, second sweet, third, fourth sweet. So 4 options ये होंगी and then for each there will be 4 sweets. So total 6 into 4 means 24 options are there. Okay, let's begin now our A levels things. ये तो सिंपल काउंटिंग प्रिंसिपल था, आपको टोटल काउंटिंग कैसे करनी है. अब हम आगे बढ़ते हैं. Okay, now please try to understand the situation. I am telling you that there are 3 chairs. One, this is the first chair, this is second chair, and that's the third chair. We have 3 boys, A, B, C, with the name A, B, C. We want to fill out these 3 chairs with those 3 boys, A, B, C. We have equal number of chairs and students or boys. हमने उन 3 boys को इन 3 chairs पे बिठाना है. In how many different ways we can do that? I am telling you one of the ways कि first chair पे the person with the name A will sit, second chair पे B and third पे C. Second option is if I switch B and C, here A, C, B. G, tell me in how many ways you can arrange these boys? How many possible arrangements are there? Yes, Khadija is saying 6. Okay. जी, जिनको पता चलो जल्दी से अनम्यूट करके अपने आंसर बताया करें ताकि हम आगे चलते रहें. सो ए सी बी, अब मैं वो खदीजा ने कहा कि 6 पॉसिबिलिटीज हैं तो मैं वो 6 पॉसिबिलिटीज बताता हूं. फर्स्ट ईयर पे ए, देन सेकंड बी एंड सी, ए सी बी. देन इफ आई मेक के on first year B will sit, then A and then C. The other option I have B on the first position, C on the second, A on the third. Then I have C should sit on the first position, then A on the second chair, B on the third chair, or C on the first, B on second, A on the third. Am I left with any other option? So I have written all of them. So if you count 1, 2, 3, 4, 5, 6, there are 6 possibilities. So 6 outcomes. आपने लिस्ट करके देख रही हैं. इसमें देखिए हर नंबर एक दूसरे के साथ स्विच हो रहा है. नेक्स्ट केस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं. If we have 4 chairs now and 4 boys with the name A, B, C, D. Your first option is A will sit here, B here, C here, D here. Now tell me how many ways are there? In how many ways? 24. 24. Khadija is saying there are 24 ways. Fahad, what do you say? Fahad says कि खदीजा ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा. सिर्फ 24 ही है. 24 ही है. So 24 ways हैं, उनमें से मैं कुछ लिखता हूं ताकि आपको पता चले. A, B, D, C, A, C, B, D, A, D, C, B. Okay, A को भी कहीं ले जाते हैं. B, A, C, D, B, C, A, D. So I have written some of the ways. So basically करना क्या है कि आपने हर नंबर को मीन हर पर्सन को आपस में स्विच करना है
और हर किसी को आपस में स्विच करेंगे तो आपने देखना कि टोटल कितने वेज बनते हैं, कितनी वेज बनते हैं, कितनी अरेंजमेंट बनती हैं। तो हमें पता चला कि 24 अरेंजमेंट्स बनेंगी। इस क्लास के बाद आप चेक कीजिएगा कौन सी 24 अरेंजमेंट्स बनती हैं। लेकिन ये हो कैसे रहा है? इस तरह तो क्वेश्चन 24 का ही काउंट करना मुश्किल था। अगर मैं 5 फैक्टोरियल कर देता तो वो तो सॉरी, अगर मैं 5 चेयर कर देता और 5% तो उसके लिए काउंटिंग और मुश्किल हो जाती, 6 के लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाती। तो क्या मेथड यूज हो रहा है, जरा हमें वो अब अंडरस्टैंड करना है। प्लीज सी हियर नाउ, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेथड कि अगर हमारे पास 10 चेयर या 20 चेयर या 100 चेयर भी आ जाए तो वी कैन काउंट द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ओके, फर्स्ट आई विल सी this chair. I want to fill out this chair first. Please stay focused. ये चैप्टर ऐसा है कि थोड़ी देर के लिए अभी आपकी अटेंशन डाइवर्ट हुई तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा। First, I want to fill out this first chair. तो I'll see कि how many options do I have for this chair. इस चेयर पे A भी बैठ सकता है, B भी बैठ सकता है, C भी बैठ सकता है। So for the first chair, I have 3 options. Okay, once I have filled the first chair with one of the person, A बैठ गया होगा या B बैठ गया होगा, जैसे कोई एक बैठ गया होगा। Now I want to fill out the second chair. एक जब फिल होगी, एक चेयर फिल होगी, एक पर्सन बैठ गया। For second chair I have 2 options now. So for second chair I have 2 options. और अगर वो भी फिल होगी तो लास्ट चेयर के लिए I have only 1 option. So 3 into 2 into 1 is 6, and the more important is 3 into 2 into 1 is 3 factorial. Now if I have 4 chairs, 1 2 3 4, please see here. माहिरा बताएं फर्स्ट चेयर के लिए कितनी ऑप्शंस है हमारे पास? 4, यस। और फिर सेकंड चेयर के लिए हमारे पास, क्योंकि एक पर्सन ऑलरेडी यूज हो चुका है वो एक चेयर पे, सो सेकंड चेयर के लिए वी हैव 3 ऑप्शंस। नेक्स्ट के लिए वी हैव 2 ऑप्शन, एंड लास्ट चेयर के लिए वी हैव ओनली 1 ऑप्शन। 4 into 3 into 2 into 1 is 24, and the most important is it's 4 factorial. सो खदीजा ने मेंटली कैसे आंसर जल्दी बता दिए थे? So she know 3 into 2 into 1 is basically 3 factorial. So 3 chairs है, 3 लोगों को वहां पे एडजस्ट करना है और आपस में हर तरह स्विच हो जाएंगे 3 factorial. So 4 लोग हैं, उनको 4 chairs पे बिठाना है, तो simply do 4 factorial. Now what does this factorial is doing here? So factorial क्या कर रहा है कि हर चेयर को आपस में स्विच कर रहा है। सॉरी, A B C D 4 people हैं। ए को बी के साथ, बी को सी के साथ, डी को ए के साथ, बी को ए के साथ, डी को बी के साथ, सी को एक, सब आपस में स्विच कर लें। एक को स्विच करने से एक डिफरेंट अरेंजमेंट बनती है। तो इस तरह बहुत सी आपस में स्विचिंग करने के बाद टोटल कितनी अरेंजमेंट बनती हैं ये काउंट करता है आपका फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल इज 24. सो नाउ इफ आई हैव 5 चेयर्स एंड देयर आर 5 पीपल एंड यू वांट कि वो 5 चेयर्स उन 5 पीपल से ऑक्यूपाई हो, और कितनी डिफरेंट अरेंजमेंट बन सकती हैं। सो इट्स अ 5 फैक्टोरियल। एंड व्हाट इज 5 फैक्टोरियल? इट्स 120। ये आप मेंटली कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। सो नाउ यू गॉट द लॉजिक फ्रॉम दोस टू एग्जांपल्स कि 3 चेयर्स 3 पीपल यू वांट टू अरेंज इन एनी वे, डिफरेंट अरेंजमेंट कितनी बनेगी? 3 फैक्टोरियल। फॉर 4 इट इज 4 फैक्टोरियल, 5 इट इज 5 फैक्टोरियल। आई होप यू गॉट इट। Now we have 1 2 3 4 5 digits here. Using all these digits once at one at a time, mean एक digit को हम multiple time use नहीं कर सकते। Mahin, I hope you are here. So 1 2 3 4 and 5, these are the 5 numbers we can use. ओके इनको यूज करने से हम एक नंबर बना सकते हैं। जैसे कि एक मैं बताता हूँ कि आई एम राइटिंग 1 2 3 4 5, 12,345. If I switch 4 and 5,
I'll get 12,354. So in sub numbers को आपस में switch करने से all the time you are getting a different number. So Alize, how many different numbers can be made using these 5 digits? Sir, 120. It's 5 factorial, which is 120. So there are 120 numbers that can be made using these 5 digits. And if you have 8 digits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, then using all these digits one at a time, mean कोई doubling नहीं होना चाहिए, कोई number repeat नहीं करना. So how many numbers can be made? 8 factorial. 8 फैक्टोरियल मीन हर नंबर एक दूसरे के साथ हर तरह स्विच होगा और फिर टोटल पॉसिबल आउटकम्स बने पता चलेंगे आपको. 8 फैक्टोरियल, इट विल बी अ लार्ज नंबर. द वर्ड active, ACTIVE, there are 6 letters of this word. My question is, these letters can be switched with each other in a different way. और हर दफा आपके पास एक नया नंबर आएगा, एक नया वर्ड आएगा. एक तो आपके सामने है एक्टिव. इफ आई राइट C इन द फर्स्ट पोजीशन एंड A सेकंड पोजीशन पे, आई विल गेट CATIVE. एक आपके पास वर्ड बन जाएगा. इन सब अल्फाबेट्स को आपस में स्विच करने से बहुत से वर्ड्स बन सकते हैं. डजंट मैटर कि वो वर्ड डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है या नहीं. We have to find all the possible arrangement, all the possible number of words. So what will be the answer, Taimur? How many words can be made? 720. 6 factorial, 720. I hope this is clear. Okay, अब देखिएगा, थोड़ा सा मैं आप क्वेश्चन को आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल करूंगा. Now we have 3 cards. First card पे I have written 1, second पे I have written 2, third पे भी 2. इन तीनों कार्ड को मैं इकट्ठा रख के I can make different numbers. One of the number I am writing here is 1, 2, 2. Yes, how many numbers can be made here by using these numbers, these 1, 2, 2? Yes, Fahad. How many different numbers can be made? Fahad, are you there? Yes, Fahad is there. शायद आप बोल रहे हैं लेकिन मुझे आवाज नहीं आ रही. Anyways, कौन बताएगा? जी मरवा. How many numbers can be made? 3 कह रहे हैं या 3 फैक्टोरियल कह रहे हैं? 3 कह रहे हैं आप. ओके, बेसिकली अगर मैं वही मेथड यूज करूं यहाँ पे कि देयर आर 3 नंबर्स 1, 2, 2, तो मैं क्या लिखूंगा? 3 फैक्टोरियल. एंड 3 फैक्टोरियल का आंसर होता है 6. इसका मतलब 6 डिजिट, 6 नंबर्स बनने चाहिए. अब मैं वो नंबर बनाता हूं, देखिएगा. एक नंबर तो बन गया 122. 2 स्टार्ट में लेके आऊं तो 212, ये भी बन सकता है. और फिर नंबर बन सकता है 221, 221. जी, इसके अलावा कोई नंबर बनता है? इसके अलावा तो कोई नंबर नहीं बन रहा. लेकिन क्योंकि 3 नंबर से मैंने 3 फैक्टोरियल किया तो 3 फैक्टोरियल का तो आंसर 6 आ रहा था. बट वी आर गेटिंग ओनली 3 पॉसिबिलिटीज, 3 पॉसिबल आंसर्स. सो प्रॉब्लम क्या हुआ यहाँ पे कि मैंने जब 3 फैक्टोरियल अप्लाई किया तो उसने क्या किया? 1 को 2 के साथ स्विच किया, 2 को 1 के साथ स्विच किया, 2 को 2 के साथ भी स्विच किया. ये आपस में भी स्विच हुए हैं. बट वी नो कि 1, 2, 2 में जो 2 आपस में स्विच हो जाए तो नंबर फिर भी 122 ही रहता है.
you don't get a different number. That's the same arrangement. लेकिन वो जब 3 फैक्टोरियल करते हैं तो वो उन तीनों को आपस में स्विच करके आपको आंसर बताता है. हमने उसको बताना है, जब उसने 3 फैक्टोरियल किया 6 आंसर दिया बट एक्चुअली 3 है, हमने उसको बताना है कि देयर आर 2 नंबर्स व्हिच आर रिपीटिंग, और वो उन 2 नंबर्स को भी आपस में स्विच करके आपको एक नया नंबर बता रहा है. सो वी हैव टू टेल कि इट्स डबलिंग, डबल हो रहे हैं नंबर. 122 को 2 टाइम्स आप काउंट कर रहे हैं. सो जो नंबर रिपीट हो रहा है वो कितनी दफा रिपीट हो रहा है, वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है. तो आपने 2 फैक्टोरियल से या 2 से डिवाइड भी करना है, because the number 2 is being repeated 2 times. So total there were 3 factorial divided by 2 times repetition, 2 factorial. So 3 factorial divided by 2 factorial is 3. You'll get this thing with some other examples. If we have 1 2 2 2 3, Ji Mahira, how many possible arrangements are there? How many different numbers can be made, Mahira? It's 5. Total numbers are 5. I don't need answer, सिर्फ मुझे फैक्टोरियल की फॉर्म में चाहिए. So 5 numbers हैं, 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है, और कितनी दफा रिपीट हो रहा है? 3 टाइम्स. So divided by 3 factorial. Now we have 1 2 2 2 3 3. Total there are 6 digits, so 6 factorial. यहाँ पे 2 भी रिपीट हो रहा है, 3 भी रिपीट हो रहा है. इंडिविजुअली आपने देखना है 2 कितनी दफा रिपीट हो रहा है. 3 टाइम्स, so 3 factorial, and 3 is being repeated 2 times, so 2 factorial. जितनी दफा कोई चीज रेपिटेशन हो रही है उतनी दफा हम डिवाइड करेंगे. If we have 1 2 3 4 4 5 5 5 5, now 1 2 3 4 5 6 7 8 9 numbers, so 9 factorial. 4 is being repeated 2 times, so 2 factorial. 5 is being repeated 4 times, so 4 factorial. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5. So total there are 10 numbers, so 10 factorial. 1 1 is being repeated 2 times, 2 2 times. So 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial. So you'll get the answer. Pakistan. Using the letters of the word Pakistan, how many different numbers can be made? Count, Pakistan. There are 8 letters, so 8 factorial. Divided by A is being repeated 2 times, so divided by 2 factorial. Needless. Ji Sanan. You are on mute. So 8 factorial.
Okay, Sanan, thank you. S is written 2 times और 2 factorial से भी divide करेंगे. So 8 factorial divided by 3 factorial, 2 factorial. I hope this is clear. Any problem? जी थोड़ा सा क्वेश्चन में मुश्किल करूंगा अब. सर जो इसका आंसर आएगा वो उतनी अमाउंट ऑफ वर्ड्स होंगे ना जो बन सकते होंगे. वो अमाउंट ऑफ वो नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे. नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे, ठीक है. Okay, अब I'm going to take a different case. We have A, B, C, D, E, F, G. There are 7 boys. Maheen, do you want me to remove you? There are 7 boys. ये अच्छी तरह आप क्वेश्चन सुनिएगा. And we want to write all the arrangements. हम उनको एक different sitting plan के साथ बिठा रहे हैं या एक line में हम खड़ा कर रहे हैं. So in how many different ways they can stand? Mean they can sit on the 7 chairs या एक ही line में हम इन सातों को कैसे खड़ा कर सकते हैं? So it's 7 factorial. That's not a difficult task. Simple. G. Now after this part, I know that there are 7 factorial ways for their arrangement to make them stand in a line. या एक ही line में हमने उनको अगर different seating 7 seats पे अगर बिठाना है. G. Now I'm going to apply a restriction, condition some. I'm saying that the condition is that A should always sit on the first chair. So वो vertical chair हैं या horizontal जैसे भी हैं, मैं ये कह रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7. A should always sit on this chair. So how many ways are there? So what will we do? Here A is fixed, mean there is no option for A to move. A second, third, fourth, fifth, sixth, seventh position किसी पे भी नहीं आ सकता. So A तो fix हो गया. So A को वहां बिठा दिया, fix कर दिया. Now the remaining 6 position के लिए आपने remaining 6 students को आपस में switch करना है in all the different ways. So it's 6 factorial. So the answer for second part is 6 factorial क्योंकि आपने first A को तो fix कर दिया तो वो eliminate हो गया, बाकी 6 को सिर्फ आपने arrange करना है. Third, A should come on the first position and D should always come on the last position. The condition is कि A हमेशा first position पे आना चाहिए और D हमेशा last position पे आना चाहिए. तो अब क्या हुआ? A और D fix हो गए. So in between there are 5 available positions and there are 5 members we are left with. उनको तो आप fourth, सर ये एलिमिनेट क्यों हो जाते थे? if I say eliminate नहीं हुए, बैठे हुए वहां पे, लेकिन वो काउंट नहीं हो गया ना क्योंकि वो अगर मूव मैं नहीं हो A पाएंगे. को और C को. हाँ वो मूव नहीं हो पाएंगे. A और C, ठीक A है. B C 3 हूं तो A को यहाँ पे कर दूं फिक्स और बाकियों को बेशक काउंट, तो बाकी अगर मैं B और C को मैं करना मूव कर सकूं अगर, तो वो A B C A C B, there are 2 ways. इन 2 को सिर्फ आप मूव कर सकते 2 फैक्टोरियल. A तो फिक्स है. ओके, मैंने अभी ये कहा था कि A on the first position, D on the last position. अब अगर मैं कहूं कि there are 2 friends C and D. C and D are 2 friends. They always want to sit next to each other. Now the condition is we have to arrange all these 7 kids. We can make a lot of arrangements, 7 factorial.
but the question is C and D are friends, they want to sit next to each other always. C और D हमेशा इकट्ठे बैठे. Don't tell the answer, think about it. Don't tell the answer those who know. हम चाहते हैं वो नंबर ऑफ वेज जिसमें सी और डी हमेशा इकट्ठे रहें. जी रहा. नो. सो सी हियर, हम चाहते हैं वो अरेंजमेंट फाइंड करना जिसमें सी और डी हमेशा इकट्ठे रहेंगे. तो हम क्या करते हैं, प्लीज सी हियर, कि सी एंड डी को वी विल कंसीडर वन एंटिटी. मीन उसको हम वन कंसीडर करते हैं सी और डी को. या आप ऐसा करें, हम सी और डी को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं. We will count it CD as 1. So the other are, A is 1, B is 2, E is 3, F is 4, G is 5. So C और D को मैं एक काउंट करूंगा तो टोटल कितने बन जाएंगे, 6. जब मैंने C और D दोनों फ्रेंड्स को एक ही बॉक्स में बंद कर दिया और अब उन बॉक्स को मैं हर जगह मूव कर रहा हूं, आपस में स्विच कर रहा हूं, तो वो जिधर भी बॉक्स जाएगा C और D दोनों उसी के अंदर होंगे, वो हमेशा इकट्ठे रहेंगे. So here, if you consider CD as a one entity, total बाकी 5 हैं और इसको 1 consider, total there are 6. So if I apply 6 factorial, C और D को 1 consider करके सब आपस में switch हो रहे हैं. वो C और D 1 consider किया, वो जिधर भी जाएगा वो C और D इकट्ठे जाएंगे. लेकिन further internally C और D आपस में अपनी position switch कर सकते हैं. C और D, D और C into 2 factorial. So this is giving you those possibilities in which all the time C and D will be next to each other. So basically logic क्या अप्लाई की मैंने, कि मैंने उन दोनों फ्रेंड्स को एक एंटिटी, एक सिंगल यूनिट कंसीडर किया मैंने. तो उस पूरे यूनिट को मैंने जहां मूव किया वो मूव किया ताकि वो दोनों इकट्ठे रहें हमेशा. So I hope you got it. सर तो और into 2 हमने 2 factorial फैक्टोरियल से क्यों किया मल्टीप्लाई है, क्यों क्योंकि किया? हमें ये पता है कि जब वो बॉक्स जिधर भी जाए, अंदर सी है और डी, सी और डी आपस में पोजीशन तो चेंज कर सकते हैं. सी पहले डी बाद में या डी पहले सी बाद में. Fifth, now I am going to ask, C don't want to sit with D. C and D will always be should always be separated. C और D कभी इकट्ठे ना बैठें. कितनी अरेंजमेंट है जिसमें C और D कभी इकट्ठे नहीं बैठेंगे. जी, look here. पार्ट 1 में हमने वो पॉसिबिलिटीज फाइंड की थी, टोटल पॉसिबिलिटीज, हर तरह आपस में स्विच हो, ए बी सी डी एफ जी सब आपस में स्विच हो सकते हैं. पार्ट 4 में हमने वो अरेंजमेंट फाइंड की थी जिसमें सी और डी वर नेक्स्ट टू ईच अदर, सी और डी वर नेक्स्ट टू ईच अदर, इकट्ठे बैठे हुए थे. अब हम वो फाइंड करना चाहते हैं जिसमें ये दोनों इकट्ठे ना हो. तो पार्ट 1 में से पार्ट 4 माइनस कर दें, टोटल में से जिसमें वो दोनों इकट्ठे हैं वो माइनस कर दें, बाकी वो आंसर आ जाएंगे जिसमें दोनों ये इकट्ठे नहीं थे. 7 factorial minus 6 factorial into 2 factorial. So when they were not next to each other. Last part, ABC. ABC wants to sit next to each other. अब ये तीन लोग ABC एक दूसरे के साथ इकट्ठे बैठना चाहते हैं. ABC, these are 3 friends, they want to sit next to each other. तो हम क्या करेंगे, we will make a group of A, B and C. We will consider them as a one unit. So 1, 2, 3, 4, 5. उस A, B, C को हमने 1 consider किया, तो वो जहां भी बॉक्स हो जाएगा वो इकट्ठे रहेंगे. So 5 factorial.
then internally ABC can switch with each other, ABC, CAB, BAC, ये सारे आपस में तो switch हो सकते हैं into 3 factorial. So these are the ways in which these three will always be next to each other. और अगर आपसे पूछा जाए, आखिरी बात सुनिएगा अच्छी तरह, कि these three are not next to each other, mean all these three should be separated. तो पार्ट 1 में से पार्ट 6 माइनस नहीं करना, माइनस करने से आंसर गलत आएगा. क्यों? आपने पार्ट 6 में वो फाइंड किया जिनमें तीनों इकट्ठे हैं, टोटल में से जिसमें तीनों इकट्ठे हैं वो माइनस करेंगे, तो वो वाले माइनस नहीं होंगे जिनमें दो दो इकट्ठे बैठे हुए थे. सो हम 3 के केस में सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते. सो ऑल 3 आर नेक्स्ट टू ईच अदर के लिए फाइन है, नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर के टोटल में से माइनस नहीं करना. उसके लिए क्या मेथड करेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में उनको पढ़ेंगे. सर तो ये चीजें आप रिवाइज करके आइएगा, इंशाल्लाह इसी को हम आगे फर्दर लेके चलेंगे. थैंक यू सो मच. जी महत. सर अगर वो बोलेंगे सी और डी को या तो फर्स्ट रखें या आखिर में रखें तो फिर क्या होगा?